Zafar Shabazz, and we are back with another workshop with multiple linear regression. So today's workshop is very simple as yesterday's workshop. जिस तरह की कल की workshop थी, आज की workshop भी बिल्कुल बिल्कुल आसान होगी. So assume it that today's workshop is just like a revision of yesterday's workshop. Just you are getting some more columns, and actually it's like I'm giving you some time to practice on some more previous machine learning model and data processing techniques. So because in future and upcoming machine learning models, you're gonna face some more difficult task, and yeah, with more difficulty level. So let's start with our machine learning multiple linear regression. All right. So just let me navigate to my panel. Just hold on. All right. Sorry for that. Uh, let's start. So what's multiple linear regression? Multiple linear regression is nothing more different than simple linear regression, but now we are having some multiple x values which are referencing to the y values. So it's like we are more independent variables as compared to the previous workshop. So what is the mathematical difference when it comes to multiple linear regression? I'm not gonna deep dive in this mathematical intuition, but it's important to understand the difference between simple linear regression and multiple linear regression. So when it comes to our Python code, both have 99% same coding. In Python, both use same regression function from scikit-learn library, but when it comes to mathematical intuition, so you should know what is the basic difference between simple linear regression and multiple linear regression. All right. So in simple linear regression, okay, my net is disturbing me a lot today. If you face any type of glitch, so I beg your pardon for that because today's my internet is causing me so much trouble. All right, getting back to it. So y is equal to b naught plus b1 into x1. This was our equation of simple linear regression. Yesterday we see this equation of slope. This is exactly the same equation. This is exactly the same equation, just as compared to the different we use and we are using b1 here as compared to m there. So this equation is same as the previous one we have worked on yesterday, but what is the difference coming in multiple linear regression when y is equal to b naught plus b1 into x1 plus b2 into x2 plus b and goes on to bn into xn. So n is representing infinite or the end limit of the numbers, or the number of columns we are having, or the number of independent variables we are having. So B naught is always the same. We are having the same constant for every type of problem. For each single data set, the constant will remain the same, but we are going to get different coefficient for different x values, and of course that's the always the scenario. So if we are having 2x on a same y scale, so we are going to have different coefficient of x. So for x1 we're going to have b1, and for x2 we're going to have b2. So I must explain this in Urdu as well. ये सिंपल इस तरीके से है कि जब आपके पास पहले इक्वेशन थी y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन इंटू एक्स वन, तो बी नॉट हमारा पास एक कांस्टेंट था और बी वन हमारे पास एक एज अ स्लोप काम कर रहा है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो फंक्शन का या एक्स का स्लोप काम कर रहा है, ठीक है, या कोफिशिएंट काम कर रहा है.
यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सेम वही काम हो रहा है. पी नॉट इज यूज्ड एज like constant as we were using at simple linear regression. लेकिन b1 के साथ x1 आ रहा है, और जब हमारे पास एक वेरिएबल और ऐड हो जाता है इन केस, तो हमारे पास x2 के साथ b2 भी आ रहा है, because every x has different coefficients of its own value. If you are having, for example, 5 x-axis on a particular reference of y-axis scale, so we're going to have different coefficient of x's on for all independent variables. For example, हमारे पास 6x हैं और एक y है, y हमेशा एक ही होता है, हमारे पास 6x हैं, तो हर उन 6x की या 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की या उन 6 फीचर्स की डिफरेंट कोफिशिएंट वैल्यूज होंगी. ये आई गेस इतना बहुत है मैथमेटिकल इंट्यूशन. ये मैंने इस पर टाइम स्पेंड इसलिए करा है मैथमेटिकल इंट्यूशन देने के लिए, क्योंकि बाकी सब वही सेम है जो हमने कल पढ़ा है. तो इट्स लाइक जस्ट वी आर डूइंग द रिवीजन ऑफ यस्टरडेज वर्कशॉप. ऑलराइट, getting back to it. This is the visualization of multiple linear regression, which I am not going to perform today. I am expecting that today students will perform the visualization. It's same as the previous one. You may have to configure it differently. Now it's your task at home after this workshop. By using this data set, by using the same code, you have to perform visualization. So I can know that if you are getting along with me or not, how much you are getting with me, and what are you and where are you facing difficulties. जब तक आप काम खुद से सर अंजाम नहीं देंगे जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब तक आपको मालूम नहीं होगा कि आपको कितनी मशीन लर्निंग आ गई. सो इस तरह की चीज़ें मैं हर 2-3 वर्कशॉप्स के बाद आपके ऊपर छोड़ूंगा ताकि आप काम करने के आदी हो. यस, when you do these type of things which is not even available on the internet, इंटरनेट पे तो खैर कोड अवेलेबल हो जाएगा, but on this data set I don't think so. So then you're gonna face some hurdles, and when you will face hurdles, you're gonna ask me, you're gonna ask in my Codasub community, or you're gonna ask wherever you want at Stack Overflow and whatever else and somewhere else. So then you will learn more. So that is why I'm giving this to task for visualization. I'm not gonna perform visualization today. Alright, so getting started with multiple linear regression. So okay, so today I have imported multiple libraries. For example, I have imported NumPy for linear algebra array, and Pandas for, of course, data frame input output, and Matplotlib for visualization, which is there is no need, but I've uploaded. So, okay, sklearn preprocessing, import label encoder and one hot encoder, then column transformer, linear regression, and mean squared error. You don't need to just focus on this right now. What we are doing it right now, we'll focus on that later. Today, I'm not even going to perform mean squared error. We are going to perform the simple workshop, just training a model. But your task is not to just find mean squared error. Your just task is to find visualization within the next 24 hours, which is going to help you make your machine learning skills better. All right. Just running this. This is being initialized for a long time. What happened to it? Just let's wait for until it's initialized or allocate me any CPU on Google Data Center. आज मैंने क्लाउड सीको का इवेंट कराया है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, एंड नाउ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है. गुड. ओके, इसको रिकनेक्ट करते हैं, और रिकनेक्ट करेंगे इस तरीके से कि हम कोई भी हार्डवेयर लगा देते हैं. Now it will allocate me again some different engine at Google Data Center. I hope this will connect. Okay, we are back to initializing, and just wait for it. Now we have been connected, and okay, how much RAM we have got? Oh, 12 GB of RAM, and this is such a fast RAM, guys. All right, data frame. This is the startup file, 50 startup. This is a data frame file I have already sent in WhatsApp groups, and I don't think so I've sent that in Discord group.
But if you want this file, you can just navigate to my GitHub profile and download from here. I'm copying the link from here and just sending you on Teams. And wait. Why it's not being sent? All right. I don't know why it is taking so much time to being sent. You will receive it within a few seconds. Maybe it's my internet today. My internet has killed me a lot today because there is some fiber working outside my home. All right. So we are just importing a data set from here and from this file. And let me show you this file. I have not connected to my drive. I've just pasted it over here. Oh, I don't even have my data file here. Okay. All right, brother. And now I have to download as well. Just wait and wait and wait and wait, wait. And download zip. Just wait for a minute. So let me upload. Meanwhile, just you can also code along with me. Open the code, try to understand it. If you are having some problems, you can ask with me. And I'm just adding my data file into my Colab. All right, it has been downloaded. And it has been extracted. Okay. All right. So now I have uploaded my data frame file. And here we go. The same URL. Let's explore the data. How many columns we are having? Now what's the problem, man? Okay, now we have to run this because we reinitialized our session. And then, all right, so let's explore our data. Let me zoom in for your better understanding and kill this. All right, so now in data we are having four useful columns maybe, or yeah, there are four useful columns. I have studied that. आप यूजुअली सबके इंडिविजुअल ग्राफ बना के ज़रूर देखा करें कि ये एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि आप मल्टीपल ग्राफ बना के देखें या फिर यू कैन अप्लाई डिफरेंट टेक्निक इस वेल कि आप मल्टीग्रेड ही ग्राफ बना दें कि R&D स्पेंड से प्रॉफिट में कोई फ़र्क आ रहा नहीं आ रहा एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉफिट में कोई फ़र्क आ रहा नहीं आ रहा मार्केटिंग स्पीड्स में से अब इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट में कोई फ़र्क आ रहा नहीं आ रहा और क्या डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है नहीं आ रही तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपका कितने आपके फीचर्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं देयर आर मोर टेक्निक्स एज वेल फॉर फीचर इंजीनियरिंग बट वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है वो इंशाल्लाह कई बाद में डिस्कस करेंगे अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको जस्ट मैनुअल तरीका बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास फोर कॉलम्स है वी आर नॉट हैविंग सो मच डाटा आगे जाके जब हम फीचर इंजीनियरिंग और फीचर स्केलिंग पढ़ेंगे मजीद एडवांस लेवल पे देन आई एम गोना शो हाउ वी एक्सट्रैक्ट बेस्ट फीचर्स आउट ऑफ डाटा ऑलराइट सो इसको हमने रन ऑलरेडी कर लिया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट एक्सट्रैक्ट दीज फोर कॉलम्स as you can see here we are extracting these four columns and now what does value is doing value is doing nothing but converting data frame into values or you can say array because आपको पता है कि machine learning array format में data लेता है data frame या list format में data नहीं लेता है so we are converting these values into this data frame into values अब यहाँ पे मैंने double bracket इसलिए लगाया for one dimensionally and ये तमाम के तमाम columns एज ऑन अ लिस्ट पास हो रहा है ये आप लगाते हो टू रिप्रेजेंट डाटा फ्रेम या कॉलम जब आपको प्रेजेंट करना हो कभी भी किसी भी डाटा अगर आपके पास डाटा फ्रेम है फॉर एग्जांपल उसका आप वेरिएबल नेम ले लें डाटा सेट so you have to put this square brackets to input the column
And now when you are inputting column into the dataset variable, then you have to pass column into a list, even if you have a single column. So आपके पास single column भी है तो आप उसको list में ही pass करेंगे, columns in list. Okay, so you should remember this. Now we are converting these columns into values and just transferring it to x. We are defining all these values into x, and we are also printing this value to just know if how what are the values x gonna get. And same we have done for y, because profit is the main thing we have to predict. अच्छा, ये चीज़ आप मुझसे पूछ सकते थे कि why we have put profit in y, because common sense की बात है. It's very common sense that after all this information, that if you are spending R&D and we are spending this money on administration and we are spending this money on marketing and we are living in such particular state, so what will be our profit? ऑब्वियसली बात है, आप प्रॉफिट थोड़ी बताओगे कि ये मेरा प्रॉफिट है तो मुझे कितना मार्केटिंग स्पेंड करना चाहिए. आप ये बताओगे अगर मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, सो हाउ मच गोना गेट, हाउ मच मनी आई एम गोना गेट. सो यहाँ पे प्रॉफिट इज अ टारगेट कॉलम. टारगेट कॉलम मीन्स जिस पे हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं फॉर फ्यूचर. तो वाई के अंदर इसलिए हमने सब इस कॉलम के लिए है. ऑलराइट, सो इफ यू सी एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वैल्यूज ऑफ वाई, इसको एक दफ़ा रीजन कर लेते हैं. ऑलराइट, तो इफ यू सी द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वैल्यूज ऑफ वाई, तो हमारे पास ये जो डाटा फ्रेम था जो कि हम ऊपर देख रहे हैं, ये हमारे पास एक एरे फॉर्मेट में बन गया है और हमारे पास ये तमाम वैल्यूज हर रो की वैल्यूज आ रही है. ठीक हो गया. हमारे पास R&D, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग एंड स्टेट्स, वी आर गेटिंग ऑल वैल्यूज. This value is printed by x and these values is printed by y. These all are profits. ये इंडिविजुअली हर रो अलग अलग प्रिंट हो रही है. जैसे ऊपर प्रिंट हुई थी, हर रो अलग लाइन में प्रिंट हो रही थी, यहाँ पे भी हर रो अलग लाइन में प्रिंट हो रही है. बट दिस इज सिंगल कॉलम, दीज वर मल्टीपल कॉलम्स. नाउ अ ह्यूज प्रॉब्लम वी आर फेसिंग नाउ. फॉर व्हाट वी नीड प्री प्रोसेसिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास, हाँ, इफ यू आर नॉट हैविंग मल्टीपल स्टेट्स, तो हमें कोई इतना इशू नहीं होता. हम डायरेक्ट, अगर हमारे पास स्टेट्स ना होती, हम डायरेक्ट यही 3 वैल्यूज मशीन लर्निंग मॉडल में डाल देते और ट्रेन कर देते अपना मॉडल. बट नाउ वी आर करंटली आर हैविंग वैल्यूज इन टेक्सचुअल स्ट्रिंग्स. ओके, अब टेक्स्ट वैल्यूज को किस तरह हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं. इफ यू रिमेंबर दैट वी हैव यूज्ड लेबल encoder and one hot encoder in our second workshop, data pre-processing technique. So same technique we're gonna use again in this workshop. Now let's see. I'm going to call every single pre-processing technique in our current techniques of current machine learning models. That how pre-processing techniques get some need in our machine learning models. Okay, so converting text variables into numbers. So I'm just going to define this st with a function name column transformer. Here I'm instantiating the column name state. State is our column name जिसके ऊपर हम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं. बाकी भी तो हमें प्री प्रोसेसिंग की नीड नहीं है, हमें जस्ट स्टेट के ऊपर प्री प्रोसेसिंग की नीड है, बिकॉज इन दिस वी आर हैविंग टेक्स्ट वैल्यूज जिनको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना था कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल समझ सके. लास्ट टाइम हमने बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से किया था. इस दफ़ा हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं करेंगे. इस दफ़ा मैं आप लोगों को एक नया तरीका दिखा रहा हूँ, शोइंग यू अ न्यू वे. वी आर पुटिंग हियर वन हॉट encoder, जस्ट और फंक्शन. ठीक है, हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मर लिखा, हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई हमारी ये टेक्निक है वन हॉट encoder, और या कॉलम नंबर हमारी ये है, एंड देन ये हमारी स्ट्रेटजी है. जस्ट डोंट डाइव इनटू दिस. ये आप जस्ट इसको यूँ अंडरस्टैंड कर लें कि हम कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक वन हॉट encoder का फंक्शन पास करा रहे हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग cmon के अंदर मैटप्लॉट्लिब का पर्टिकुलर फंक्शन पास करा रहे होते थे. So now in x we gonna get some transform values. So how we gonna transform it? st.fit transform and again x. तो मतलब यूँ समझना है कि वही x आ रहा है fit transform के अंदर, and that x is going to be filtered, and then after filtration it's redefining into x. Now for our knowledge we have to print the x and let's see what type of values are being stored in x. So आप ये देख सकते हैं कि जो भी स्टेट की वैल्यू थी वो यहाँ स्टार्टिंग के अंदर आ गई है और वो इस फॉर्मेट्स में है 00010 100000 and
we're not gonna get more than 3 different unique values because जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारे पास स्टेट में 3 या 4 different unique values हैं. So we are 3 different unique values, and so we're gonna get same 3 unique different labels in binary for those values. So हमारे पास अब ये जो values हैं हमारे पास जो हमारे पास data है ये now it's completely ready to be trained in machine learning model. Now, someone asked me yesterday कि why we didn't split a data. Usually regression में जरूरत नहीं पड़ती data split करने की, but for you I am gonna split data today. And how we split a data into training and test set. So here is the code, simple code. We're gonna import this function from this library. It's easy to remember. All right. So it's easy to remember. We're gonna import this function from this library. What this function just does कि आप इसके अंदर x और y डालते हैं and then you pass test size is equal to 0.2. Random state आप इसको 0 कर दें या इसको आप निकाल भी देंगे so it won't create problem for you. Test, what is test size means? It will divide random data. It will divide all data in randomly. For example, it will if you are passing 10 values, so it will divide data into 80% and 20%. Why? Because we have given 0.2 into test size. Point values after point is actually representing the ratio we are giving for test set. अब हमें 0.2 अगर हमें टेस्ट सेट के अंदर दिया so we gonna get 20% data for a test set and the rest of the data will be used for training set. हमारा data 80% और 20% डिवाइड हो गया. अब now 80% data is gonna come out as for training set and 20% is for test set. This always return a tuple. अब वो tuple का एक specific format है कि वो पहले हमारे पास 2 x की वैल्यूज आएंगी और 2 y की वैल्यूज आएंगे. Tuple will always return first 2 x values and then second 2 y values. How? First one will be the x train and the second will be the x test. Third will be the y train and fourth will be the y test. You can also print values at your home to know that what values are being get by these variables. So x train के अंदर हमारे पास डेटा आ गया जो हम ट्रेन करेंगे and y train के भी हमारे पास वो डेटा आ गया जो हम ट्रेन करेंगे. X टेस्ट के अंदर y टेस्ट के अंदर हमारे पास वो डेटा है जो अलग कर दिया गया थोड़ा सा जिस पे हम प्रिडिक्शन करेंगे टू लेट अस नो कि हमारा मॉडल कहीं बायस तो नहीं हो रहा मेमोरीज को या डेटा को याद करके तो नहीं प्रिडिक्शन बता रहा. Alright, going further. So just let me run this code. Today's workshop is going to end so soon. I have a very strong feeling. Alright, so again running this code. As you already know, we are just training here. Okay, so we got a problem. Let's see what our problem is. Could not convert string to float. All right, Florida. What happened to you, man? Haven't we? Okay, let's just rerun this. I think we forgot to run this pre-processing technique on state. Let's rerun this as well. And now let's rerun this as well. Okay, so as you see that I've just forgot to run this code, which was actually pre-processing text into numbers, which is converting text variables into numbers. So that is caused problem. That caused problem into machine learning model that अरे भाई मुझे text नहीं चाहिए मुझे number चाहिए. So now we converted text variables into numbers and now it's accepting it. It has been trained. Okay, this value is this information is very valuable, but you're not going to understand this by right now. You're going to understand this after some time, after very huge time. All right, अब हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है लेकिन आज हम प्रिडिक्शन मैन्युअली निकालेंगे ताकि आपको मालूम हो कि हम किस तरह अगर आपकी एल्गो पावर अच्छी हो तो आप मैन्युअली प्रिडिक्शन भी निकाल सकते हैं. वी नॉट गोना राइट सिंपल मतलब प्रिडिक्शन तो ऑब्वियस मतलब मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कर रहे हैं बट हाउ वी गोना फाइंड एक्यूरेसी बिकॉज इसमें इवेल्युएशन नहीं होती तो एक्यूरेसी नहीं फाइंड कर सकते आप रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के अंदर. बट वी गोना फाइंड रिग्रेशन. आप आर स्क्वायर मालूम कर सकते हो बाय सम रेजिडुअल्स बट उन सब के बगैर वो तो आपका होमवर्क है ना. उन सब के बगैर हाउ कैन वी फाइंड एक्यूरेसी of our model? So near accuracy of our model. So it's very simple. First we have to run this code.
वो क्या कर रहा है कि जितनी भी एक्स टेस्ट के अंदर वैल्यूज थी, जो टेस्ट सेट था हमारा, उसको वो प्रिडिक्ट कर रहा है और सारी की सारी उसी के हिसाब से लिस्ट तैयार हो रही है, उसी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के हिसाब से, और वो वाई प्रिडिक्ट के अंदर जा रही है. नाउ कमिंग फर्दर, नाउ कंपैरिजन. नाउ वी मस्ट सी कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है. नाउ सो वी गोना प्रिंट वाई प्रिंट एज वेल एंड वी गोना प्रिंट वाई टेस्ट एज वेल. Y predict, or you can say the estimated Y values as being stored in Y predict variable is have to be different than Y test. If it's not different, so it means that our model is 100% accurate, which is never in the real world case is absolute scenario. So let's see how much is there's a difference. So as you can see कि हमारा our first value is 12 125,714 point something, and then we're gonna get a different value 134,307.35 in our first value. So there is a huge difference, but is that a really a huge difference, or is just our assumption that it's a huge difference? So to know that what type of if it's a huge difference or not, we simply find out the difference between the actual value and the estimated value. So what we just did that we will take out mean. We will first sum all the values, then we will take out mean. So यहाँ पे हम सारी estimate values को भी और सारी test values को भी sum कर रहे हैं और फिर उनका mean भी निकाल रहे हैं, ताकि हम दोनों को उन सबका दोनों का mean मालूम हो जाए, और उन दोनों का mean निकालने के बाद सो कॉल्ड एक्यूरेसी जो हमने बनाई है खुद से, डिफरेंस निकाल रहे हैं डिवाइड करके, ताकि हमारे पास एक परसेंटाइल रेशियो आ जाए कि क्या एक्यूरेसी है हमारे सिस्टम की. अगर हम इसको रन करेंगे, सो दिस इज mean of y predict, and this is our mean of y test. All right, so according to our calculations, our near accuracy, or you can say our so-called accuracy, is 95%. 0.95 means 95%. 1.0 means 100%. ये आपको परसेंट परसेंट का मतलब खुद ही होता है कि इट्स बीइंग डिवाइडेड बाय 100. So 0.95 means 95%, 95.611%. So all right, so if we want to see the whole values के किस वैल्यू में कितनी अच्छी प्रिडिक्शन दे रहा है, तो we can see by here. तो अब आपको इससे मालूम नहीं होगा कितनी अच्छी प्रिडिक्शन दे रहा है, आपको सही मालूम होगा कि कौन सी वैल्यू टेस्ट एक्चुअल वैल्यू से कम थी. तो यहाँ पे वो 93 आ रहा था, मतलब वो 7% एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू दे रहा था प्रिडिक्शन के अंदर. एंड इफ यू आर हैविंग हियर दिस 1.30, मतलब वो एक्चुअल वैल्यू से 30% एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा था. But on our mean, we are getting a so-called accuracy as 0.95. Regression में accuracy नहीं होती, but we just try to put some our magic mind and find out the accuracy. So this is the end of our today's workshop. Today's workshop was very simple, very short, but we didn't did visualization. We didn't did visualization of our data set. We didn't did a visualization of our model. मैं ये शायद हो सकता है कल भी बता दूं दैट हाउ वी विजुलाइज अ मॉडल, लेकिन मैं ये कल वाली वर्कशॉप में बता चुका हूँ कि लीनियर रिग्रेशन की विजुलाइजेशन कैसे होती है. इसमें थोड़ी सी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी, और उसका मैं इस तरह इस वर्कशॉप में दे चुका हूँ. सो इट विल बी बेटर इफ यू परफॉर्म इट बाय योरसेल्फ एंड शो मी डिस्कॉर्ड चैनल, सो आई कैन नो क्या कितना अच्छा आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छा आप लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. So any further questions, or at which I have been lagged, मेरा नेट बहुत स्लो था, अगर मैं कहीं लैग कर गया हूँ, या कोई क्वेश्चंस हो जो आप लोगों को समझ नहीं आए, या कोई ऐसे क्वेश्चंस जो कि आज आपने नहीं पढ़ी और अभी भी समझ में नहीं आ रही, so you can ask me back. I'm open to all questions. I must open Discord as well. All right.
All right. So someone asked, sir, why we. All right. So maybe my internet was lagging that time. So we are using values just for transforming our data frame into numerical values. Because data frame ना एक list होती है ना data frame होता है. It's neither the list, it's neither the array. So we are transforming that data frame into our array because that is what machine learning accepts. Machine learning will never accept data frame alone. Is that clear? I think that does make some sense. More questions? All right. I'm having poor internet connection, so I'm just disabling my video. All right. All right. More questions, please. If you are having any further questions, please ask so I can answer you right now. I think I'm not getting any questions, so it means that I have made everything perfect, or maybe. All right, one more question. Okay, I got one question and very beautiful question. Let me show it. All right. So wait, wait. So someone asked me that what is the actual purpose of random state what we have removed here. So random state is doing nothing. Just it's like if. Oh my God. Random state is doing nothing. If we pass here this value, it means that it will just randomly mix the data set, and then it will divide data into test set and train set. Sometimes it's good, and it's never makes such huge difference. So it's all on you. Sometimes it's make a huge difference, sometimes it's never. All right. Any further questions? Okay, I'm gonna wait for. I'm gonna wait up to 2-3 minutes more if no one is having question today. So we're gonna skip. Oh, sorry. I'm gonna end this class. Okay, if someone is having any trouble sending me questions, so he or she can send questions in WhatsApp group. I'm removing privacy in WhatsApp group as well. All right, so I have removed privacy from all WhatsApp groups, all these WhatsApp groups.
So if there's any question, you can ask me on WhatsApp and you can ask me on Discord as well. All right, so 3 to 4 people said that we are fine with today's workshop, no more confusions. So if this scenario is the same for others as well, so please let me know within the time. If you are not having any questions, so please let me know that you are not having any questions, so I can move on further, and then we'll see you in the next class. All right, so I guess no one is having further questions. So we're gonna end the class within 30 seconds more if we are not having further questions. Only 2 people asked question today. Yesterday there were so many amazing question. I guess because today's workshop was just a revision to the yesterday's workshop, because someone suggested needs to just give some division to the previous workshop as well. So this was an automatic scenario that today's workshop was the just a glimpse of, or you can say just a touch, is actually the combination of all previous workshops without data visualization. You have to perform visualization by yourself, which is your own task. Tomorrow we will perform another regression problem, which is going to be a very interesting problem, and this is something industries in reality use it for real world data, and which is actually a non-linear regression problem टू व्हाट वी से पॉलिनोमियल रिग्रेशन, हम उसको पॉलिनोमियल रिग्रेशन बोलते हैं। और कल हमारी उसी का इवेंट है, एक आधे घंटे के अंदर मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से। और कल की वर्कशॉप वापसी थोड़ी सी लंबी होगी, आई गेस 50 मिनट्स 45 मिनट्स की, आज आधे घंटे की थी। एंड बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप बिकॉज it's actually very useful in industry level and real world scenarios. Okay, I got one more question, sir. Can we use this model in our production? Yes, you can use this model in production, but right now I haven't teach you how to use this model in production. So please have patience because other students will run away because production is something a little bit difficult. So we'll do this inshallah after some time. All right, so I guess everyone is clear. Everyone has no confusion at all, and everyone is clear for today's session, and everyone got every key lesson of today's workshop. Allah. And if someone is having further questions after my workshop, so I'm free for next 1 hour on WhatsApp as well. I can answer everything, and on Discord as well. So don't hesitate while asking any good question. All right, bye bye, Allah Hafiz.